After former Jammu and Kashmir Chief Minister Farooq Abdullah's comments on the Delhi blast raised eyebrows, another former J&K CM, Mehbooba Mufti, made a shocking statement, placing the blame on the central government for creating a poisonous environment in Jammu and Kashmir. The PDP chief went on to allege that the problems of Kashmir were expressed in front of Red Fort and that the youth of Jammu and Kashmir are being deviated, and that is due to the poisonous atmosphere in the state. Meanwhile, BJP hit out at Mufti, calling her statement condemnable and accusing her of playing dirty politics over terror, especially at a time when the country needs to unite. Earlier, Farooq Abdullah had dismissed the results of Operation Sindoor and said that it was important to investigate why the doctors took up the step they did. Not just that, Congress's Hussain Dalwai has questioned the timing of the attack and said that injustice in Valley will have repercussions. BJP, meanwhile, has hit back at Congress for justifying and defending the Delhi blast terrorists. Take a listen to the political reactions that we are getting on the story. दिल्ली वाले लोगों को ये समझ है या वो ये सोचते हैं जितना हिंदू मुस्लिम होगा, जितना ब्लास्ट होंगे, जितना खून खराबा होगा, उतना मुल्क में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उनको वोट मिलेंगे? मुझे लगता है उनको दोबारा सोचना चाहिए। मुल्क कुर्सी से बहुत बड़ा है और ऐसा मुल्क, हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसको दुनिया पता नहीं किस नजर से देखती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह रहते थे, मगर आज पूरा जहर आलूद माहौल बन गया और कहीं ना कहीं वो जहर आलूद माहौल भी जिम्मेवार है जो आज कश्मीर के नौजवान अपने रास्ते से अलग होकर कोई खतरनाक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी बात नहीं होगी, उससे तो कुछ नहीं निकला, नतीजा नहीं निकला। हमारे 18 आदमी मारे गए, हमारे बॉर्डरों पर नुकसान हुआ। अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर कर सके, कि वही एक रास्ता है। वाजपेयी जी की बात मैं आप कहना चाहता हूं, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी अगर दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेंगे तरक्की सुस्त हो जाएगी। कि जिस ढंग से कश्मीर में अन्याय हो रहा है उसका भी परिणाम कुछ होगा, ये मानना चाहिए। पी चिदम्बरम साहब वो भी देश के होम मिनिस्टर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूमात है और वो पढ़े लिखे हैं। उनका अमित शाह जैसा नहीं है, वो खुद माने जाने वकील हैं। तो वो जो बोलते हैं कि अंदरूनी मामला भी इसमें होगा, अंदरूनी आतंकवाद होगा, तो इसकी जांच होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि आरएसएस जिस ढंग से प्रचार वगैरह करती है, ऋतुम्बरा का ये आया था, उनको वो छोड़े, तो क्या सरकार आरएसएस का भी जांच करेगी? Pradeep, thanks very much for being with us. Your first reactions to this comment by a Congress leader who's made a link between he's raised question marks on the timing of these blasts and its proximity to the elections. That's number one. And number two, accusing the RSS of fomenting trouble in Kashmir post these blasts. How would you respond to these 2 points? Well, Vishnu, you're an extremely senior journalist and the nation has followed your coverage on it. This precisely is nothing but terror apology of the Congress party and the Congress party giving cover fire to the terrorists. And this is the same mindset which was shown by the Congress party when it was in power, when, as per Mr. Salman Khurshid, Sonia Gandhi had shed tears for the Batla House terrorists. So time and again, whether it is Mehbooba Mufti or the Congress party of Rahul Gandhi now, they believe that the terror apology and cover fire for the terrorists comes first and nation's interest comes last. At the same time, this also proves the point of the Honorable Prime Minister when the Honorable Prime Minister had said that Congress today has become a fringe and is nothing but a front of the Muslim Maoisti Congress. This is very unfortunate that a former Chief Minister is trying to instigate the youth once again. This is
not a good politics. We have seen how New Delhi has taken remarkable steps for the betterment of the situation in Kashmir Valley. Attempts being made to again create trouble in the Kashmir Valley. Such statement made by Madam Mehbooba Mufti is a bad part of politics. Politics should be done on the issues for the betterment of people. 2019 का फैसला शायद नहीं होता अगर महबूबा मुफ्ती जी बीजेपी के साथ हुकूमत नहीं बनाती, जिसका आज ये रोना रो रही हैं। ये रोना बेकार है उनका, इस तबाही की वो जिम्मेदार हैं और उनको हर घर में जाके लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने 2014 से लेकर 2019 तक किया है।